कौन कौन नहीं आया है? बहुत लोग नहीं आया है। चलिए, we'll start further. This one, let us not wait because we are left out with limited times. So we'll start. They'll come and join. Okay, we are going to do the single entry system. Weightage at least 10 मार्क तो इस एरिया से आना है. So what is single entry system? First we have to understand single entry system ये होता है. We know that classification of accounts पे 3 टाइप का अकाउंट्स है. कौन सा है? What are all they? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. 3 टाइप का अकाउंट्स होता है. सिंगल एंट्री सिस्टम पे लोग सोचता है ये एक सेट का एंट्री बनाता है, दूसरा नहीं बनाता है. इट इज नॉट लाइक दैट. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन they use the single entry system. Some of the personal accounts, some of the real accounts, expenses के लिए कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करता है. That is, a nominal accounts are generally not maintained. Therefore, you cannot make the trial balance. जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकता है जब फाइनल अकाउंट्स नहीं होता है, then you can't do the trading profit and loss account balance sheet. इसी वजह से आपको क्या है, लॉस क्या है, बिजनेस का पोजीशन क्या है, ये सब मालूम करने में दिक्कत होता है. सो कैसे इन कौन सा मेथड है? एक है statement of affairs method, and the another one is conversion method. In the statement of affairs method, we don't try to convert the present system into double entry system. तो जो चल रहा था उसी को हम फॉलो करेंगे, लेकिन प्रॉफिट कितना है करके हम फाइंड आउट करेंगे. So that is the which method? That is the statement of affairs method. We don't change the present system. By adjusting the information, we get how much is the profit for the current year, and somehow we make the balance sheet. But that doesn't have any authenticity. Legal just memoranda वे पे हम बनाता है उसको. The conversion method, we convert the single entry into double entry and we maintain a double entry after that. तो ये मेथड होता है कन्वर्शन मेथड. सो दो मेथड होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ फेस मेथड, दूसरा है कन्वर्शन मेथड. राइट. स्टेटमेंट ऑफ फेस मेथड ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन आएगा. 99.9% आपका क्वेश्चन आता है फ्रॉम द कन्वर्शन मेथड. सो स्टेटमेंट ऑफ फेस मेथड आई एम नॉट गोइंग टू concentrate. We will be doing mostly conversion method पे हम प्रॉब्लम करेंगे. फाइंड करेंगे प्रॉफिट एंड मेथड. ये फॉर्मेट प्रॉफिट हम सिंपल में यूज करेंगे. फर्स्ट मेथड,
इस पे प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग so ठीक है। पर्टिकुलर्स जो भी वर्किंग है वो तो हम डिटेल का पे करेंगे। देन द अमाउंट, okay, so we'll start with the closing capital. Closing capital, add drawings, this total less additional capital introduced, which होगा capital. My get profit or the billing, so you get it. So this is the way we do it in the statement of affairs method. Just you compare closing capital or opening capital, जो closing capital opening capital find दिया हो, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हो, उससे ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको मिलेगा क्लोजिंग capital and compare it and do this. So that's it. That's all we do it in the statement of affairs method. Only one problem, then I will switch over to the conversion method, because conversion method 99.99% conversion method ही आएगा, and this type of problem it doesn't come, therefore doing only that. And, go for the problem number, just a minute, I'll tell. Okay, go for the problem number 3, statement of affairs method. This is in the PDF में है, सबका पास PDF आ गया होगा, आ गया ना, सबका पास PDF आ गया ना? I sent it in the morning. There are 21 pages is there. In this, the first page, you have the problem. शुरू कर लें? Shall we start? हाँ जी, सो बोलो। हाँ जी, okay, right. PDF page number 1 and 2. Question number 3.
The following assets and liabilities are liabilities of SPT at the end of the year 2008. Sorry, information here. During the year, he had withdrawn rupees 6,000, 3,000 in goods from the purchase of the business. He had also incurred rupees 1 lakh as additional capital. A machine of book value 25,000 had been sold during the year for rupees 20,000, and the new machine costing 58,000 was purchased. Furniture costing 2,000 was also purchased during the year. Prepare the statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2008. So कैसे हम बनाएंगे इसमें देख लीजिए. Right. So first statement of statement of profit we have to make it. Statement of profit for the year ending 31st December 2008. Particulars, details, amount. कैसे होगा ये statement of profit? Closing capital, add drawings, total, less opening capital, introduced, फिर आएगा विल सी इट. ठीक है, वर्किंग नोट जाइए, विल मेक द फाइंड आउट कितना है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना है करके हम फाइंड आउट करना है. सो वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग नोट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब ये बैलेंस शीट है. हम बैलेंस शीट इसलिए इसको कॉल नहीं करता है, रीजन ये है बिकॉज वी डोंट हैव द ट्रायल बैलेंस. अगर ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करेगा तो उसको लीगलिटी होती है. ठीक है, जैसे होता है, कोई अथेंटिसिटी नहीं है क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं है. जो इंफॉर्मेशन उससे हम इसको जुगाड़, सो वी कॉल बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. मतलब एक तरीके का हम कुछ अकाउंट जुगाड़ कर रहा है टू फाइंड आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, अफेयर्स एज ऑफ 31st दिसंबर 2008 और दूसरा, ठीक है, एक पे liabilities, assets. ये तो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट पे हम लिखना है एसेट. अगर एंड ऑफ द ईयर बनाएगा तो आसान क्लोज अप लिख सकता है, लेकिन उसका अलावा कहीं भी आप बना दो इन बिटवीन द इयर्स, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अदर देन एंड ऑफ द ईयर, देन वी विल बी राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1/1/2008. ये क्या क्या दिया है?
machinery pieces are asset है ना, स्टॉक तो आएगा asset साइड पे आएगा, ये भी स्टॉक है 30,000. देन डेटास 50,000. फिर क्या है, कैश इन हैंड इज 2,000. फिर क्या है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, सो क्रेडिटर्स 30,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000. दे से बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो नीचे पढ़ लीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है. Provision is made for depreciation and cost of machinery at the end of the year. Rupees 5,000 goods sent on consignment, 25% above the cost, and the goods were not sold until 2009. A check for rupees 1,000 had been deposited on 31st December 2008, but credited in 1/1/2009. ठीक है, तो यहाँ बैंक कर लीजिए, चेक डिपॉजिटेड, सॉरी इसमें बैंक बैलेंस कितना दिया है, 6,000 दिया है. बैंक बैलेंस 6,000 प्लस कर लीजिए कितना है, चेक डिपॉजिटेड वॉज 5,000 for goods sent on consignment. Goods were not sold. A check of rupees 1,000 have been sent. तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी नहीं, उन्होंने ये बता रहा है एंड ऑफ द ईयर, चेक डिपॉजिट कुछ नहीं है. हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस है, वैसे के वैसे हम लेंगे. सो ये तो आप ले सकता है 6,000. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन the passbook balance and the cash book balance. Whatever is the cash book balance, that we have to take it. लेट क्यों ज्वाइन किया दिव्यम? It is single entry. Okay, right, 6,000. So we will be getting what is the opening capital, 1 lakh, 1,08,000, 1,08,000. So minus 34,000, 1,08,000 minus 34,000. तो हमारा आ गया है क्या, ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर है 74,000 is the opening capital. ठीक है, any doubt in this? Any doubt in this? I hope इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए. Opening capital is 74,000. ठीक है, right. Let us make the closing capital. So here, closing balance sheet, statement of affairs. ये तो end of the year हम बना रहा है. So we have to call this as statement of affairs as on close of. As on close of December 2008. Okay. Liabilities.
assets rupees 20 नीचे उसके कोई अगर कुछ information है, then we have to, what is 3, what is Divyam? If anybody is having any doubt, please unmute yourself and ask. किसी का कोई डाउट है अनम्यूट करके आप पूछना, ठीक है? एंड क्या है A3? नो सर, आई वाज जस्ट टेलिंग हिम. ओके ओके, राइट. Now let us go for this one. In the closing statement of affairs, we have to do the adjustments. The adjustments opening balance sheet पे नहीं आता है, only the closing balance sheet the adjustments will come. So सबसे पहले adjustment कर लीजिए, फिर बाद में हम जो भी करना है कर सकता है. Provision is to be made for depreciation 10% on cost of machinery at the end of each year. On December 31st, 2008 includes 5,000 for the goods sent on consignment, 25% above goods were rented. So it is included. जब include होता है उसका कुछ करने का जरूरत नहीं. Include 25,000 for the goods sent on consignment at 25% above the cost. Goods were not sold until 2009. इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि consignment stock जो unsold stock है that is to be included in the closing stock. It is a part of closing stock at cost. हम इसको नोट लिखना है. It is assumed that 5,000 it is at, नहीं तो आप उसको ये कर लीजिए, ठीक है. Goods sent on consignment, goods working note, first working note, goods sent on consignment at invoice price. कितना है? 5,000. We have to consider only at cost. So less loading. Loading कितना है? 1/4 on cost करके बता रहा है. So 1/4 on cost का मतलब 1/5 on invoice price. तो ये कितना हो जाएगा? 5,000 into 1/5. इसमें लोडिंग है 1,000 रुपीज. तो consignment stock at cost 4,000. So यहाँ ले लेंगे closing stock. Closing stock कितना दिया है यहाँ? Stock is 30,000. 30,000 minus loading 1,000 रुपीज. तो ये हो जाएगा आपका 29,000. ठीक है, राइट. फर्स्ट वाला तो हो गया. Getting it? Right. Now the second adjustment. What is the second adjustment? The goods not sold. A check of rupees 1,000 has been deposited on 31st March 2008 but not credited. Okay, second is bank balance. As per passbook कितना है? As per passbook हमारा बैंक बैलेंस दिया है प्रॉब्लम पे 8,000. At check deposited not collected. कितना दिया इसमें? check of rupees 1,000 has been deposited. तो 1,000 रुपीज को ऐड कर लीजिए. ये हो जाएगा आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 9,000. So take it here.
So बैंक 9,000, क्योंकि हाँ हम लेना है ओनली जो कैश बुक में है बैलेंस उसको लेना है, नॉट द बैलेंस एट पासबुक। ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट करना है दैट वी विल बी डूइंग इट। ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट। अच्छा और भी है। A check of rupees 2,000 issued on 26/12/2009 was presented on 31st। इसका तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ये सारे 31 दिसंबर 2009 का है, 2009 का है। ओपनिंग 1/1/2009 मैं गलत पढ़ लिया, राइट। तो इसमें क्या आएगा? चेक इश्यूड माइनस चेक इश्यूड, एक्सक्यूज मी, अभी ठीक है? यस रिया, now you should hear my voice. Okay, so we have got the bank balance on 31st December 2009 as 7,500, उसको यहाँ इनकॉर्पोरेट हम कर लिया। और क्या है यहाँ? बस और कुछ नहीं। नाउ वी हैव टू कंसिडर ओनली द डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन किस में आएगा? मशीनरी पे आएगा। सो मशीनरी कितना है? क्लोजिंग बैलेंस दिया 25,000 दिया है, लेस डेप्रिसिएशन। What is the rate of depreciation? They say 10% on the cost of machinery, 10% on also.
minus it 22,000. We have done all the adjustments. So जो item disturb नहीं हुआ है उसको वैसे के वैसे incorporate कर दीजिए. So हो गया है डेटास. डेटास कितना है? डेटास है 60,000. Then cash 500. Creditors 20,000. Creditors 20,000. Outstanding expenses 3,000. बस सारे हो गया. अभी इसको क्लोज कर लीजिए, बंद कर लीजिए, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है. और डेटा से बैलेंस ऑन 31st December 2009. Balance on 31st December 2009 60,000. Add dishonored check 500 minus customer directly deposited in bank. कितना deposited directly into bank? 1,000. उसको माइनस कर लीजिए, उतना डेटा कम हो जाएगा. So we have is the closing data. Okay, so we will be taking here closing data 59,500. ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं करके? डेटा दिया है प्रॉब्लम पे 60,000 और एडजस्टमेंट पे दिया है एक चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया है, और एक डेटा डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक. मतलब ये सब एक्शन नहीं हुआ है. हम डेटास को जो डिसऑनर चेक है उधर डेटा से मिलना है, इसीलिए उसको ऐड किया है. एंड जो कस्टमर डायरेक्टली पे किया है उतना डेटा कम हो जाएगा, तो हम उसको माइनस किया है. सो बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस 59,500 हो गया. एनी डाउट इन दिस? इज देयर एनी डाउट? यार बता दो यार, मैं भी कुछ बात नहीं कर रहा है. क्या बात है? समझ में आ रहा है ना? हेलो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? हाँ जी. Nobody is ready to talk. Clear, sir. Okay, thank you, Rajan. Okay, right. So 59,500 I have taken. Rest all the things, there is no problem. As it is, we have to take creditors again 20,000, and outstanding expenses 3,000. Bank B ho gaya. Now close it. You will be getting the closing balance. So 22,500 plus 59,500 plus 29,000 plus 8,000. The total is 1,19,000. 1,19,000 minus 23,000. So closing capital 96,000. There nothing is said about any drawings and other things and all. तो हम यहाँ लेंगे closing capital 96,000. Nothing is said about the drawing, so drawing is nil. ठीक है. And total हो गया है 96,000. Nothing is said about additional capital introduced. ये भी तो nil हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर लीजिए 74,000. You will be getting how much is the current year profit? Profit for the year. Profit for
the year ending 31st December 2009. 22,000. सर ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन दिया है? कहाँ दिया है? सर ये क्वेश्चन नंबर We are doing question number. अरे यार मैं तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा था या 3 कर रहा था? 7 कर रहा था. हाँ सर जी. आपने ना 7th कर दिया उसके बाद हाँ, ड्राइंग्स ऊपर अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. हाँ, ड्राइंग्स कहाँ दिया है? पिछले पेज पे दिया है. आशिमा एंड दिस इज द आई थिंक पीडीएफ पेज क्या है? कौन सा है पीडीएफ पेज? 3 and 4. सर 3 and 4 Okay, sorry friends. Okay, right. So यहाँ Ashima started business on 1/1/2008 with 50,000 capital, contributed equally at the profit sharing ratio 3:2. The drawings were 300 200 per month. अरे टोटली पूरा गलत हो गया है. राइट, चलो मशीनरी एट कास्ट इतना इतना ठीक है. डेटास ओनली दिस थिंग इज लेफ्ट आउट. ठीक है. 50,000 यहाँ ओके. And 300 and 200 per month. The drawings were 300 200 per month. No accounts. So this is 31st December 2008. We need not to bother about it. We have to find the profit. Acha, determine the profit for the year 2008 and 2009. ठीक है. We are making only making for ये है. ये तो सही है. ठीक है. 74,000 and drawings कौन सा साल का इसका ले सकता है? Okay, right. Take it. We are assuming that the drawing is there for the year also. Both drawings. Okay. Drawings कितना आ जाएगा? Anyone is talking? Okay. We'll take the drawings. Drawings. So here for 300 plus 200. So 500 into 12. 6,000 we can take it. Okay. So drawings, take the drawings here. $6,000. So this has become 80,000 and the profit is 16,000. Okay, so here combined capital I have taken. हाँ जी. सर ड्राइंग्स तो ऐड होगी ना मैं कहाँ ले लिया? एडिशनल कैपिटल पे ले लिया. सॉरी फ्रेंड्स. So this is 6,000 and your total capital becomes 1,02,000 minus 74,000. So this is 26 plus 2, 28,000 is the profit for the year. Right. This we can write as share of on A. Who are the partners? The partners are Ashima and Bina. So the profit sharing ratio is 3:2. Share of A will be 28,000 into 3/5 and share of B will be 28,000 into 2/5.
28,000, 16,800, and 11,200. बस इतना ही है. And for 2008 you can make. So with this our statement of is more than this. Reason ये है हमारे लिए more important is the conversion method. Okay, right. 8 आप खुद बनाएंगे and total will be coming, दोनों का total together it will be coming 74,000. ठीक है, उसमें तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. Make it no problem. Another year, I don't want to waste the time now because this area is not इतना important नहीं है and you can understand also. Okay, right. Now we'll go for the next area. It is a conversion method. Conversion method में क्या करेंगे हम? The single entry into double entry. We convert the single entry into double entry and we prepare the proper balance sheet, trading profit and loss account. उसके बाद that will be maintained. The double entry system will be maintained. So this is how we do it in the conversion method. So पिछले क्लास पे हम देखा था sectional balancing, self balancing देखा था. That we have made the debtors account and creditors account. So missing item. Source account. ये हमको मालूम होना चाहिए. So क्या हो सकता है missing items? First is credit sales. Credit sales, or you may miss opening debtors or closing debtors, collection from debtors, अगर ये मिस होगा तो we will make debtors account. The source account is the debtors account. ये debtors account बना के उसमें से हम find out करेंगे what is the missing information. ये चार में collection from debtors, चार पे कुछ भी मिसिंग हो सकता है. That we will find out by preparing the debtors account. ठीक है. Second, cash sheets, drawings, balance of cash and the bank, or closing balance of cash and bank, defalcation, डिफॉल्केशन का मतलब जो कोई कैशियर है वो पैसा आ गया है, we call defalcation of, उसको हम बोलते हैं defalcation. ठीक है, तो कोई लेके भाग गया है कैशियर, तो that we call it as a defalcation of cash. So by preparing cash book, we will be getting the third purchase, I think the sharing is a little late. It is happening here. Right. Credit purchase, then opening creditors, closing creditors,
cash paid to creditors. ये सब missing है. Then we will be preparing creditors account and we will get the information. अगर depreciation से जो missing हो रहा है, then कितना खरीदा है, loss on sale of asset, by preparing the asset account we will be getting this one. Okay, asset account. कोई भी asset account we will prepare. Opening balance, closing balance, loss on sale, profit on sale, depreciation. अगर ये नहीं दिया है तो हम asset account को open करके उससे हम find out करेंगे इस information को. Asset account open करके from that we will be preparing, we will be getting this information. Account बनाएंगे, ठीक है. So these are all the things we supposed to. इसमें पता नहीं इस शेयरिंग में थोड़ा लिटिल प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है नहीं है. सो ये है मिसिंग इंफॉर्मेशन, इसका सोर्स अकाउंट ये है. सो इफ एनीथिंग इज मिसिंग इन दिस अकाउंट्स वी विल बी गेटिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशंस. ठीक है, राइट. वी विल गो फॉर द प्रॉब्लम. एंड कैसे डेटा अकाउंट्स होता है, वी नो डेटा अकाउंट कैसे होता है. लेट अस सी टोटल डेटा अकाउंट. क्या होगा, this is specimen of data account. Opening balance brought down, closing balance carried down. Last class we have discussed all these things. अगर assets होगा तो उसका opening balance कौन सा साइड पे होगा, डेबिट साइड पे होगा. एंड liabilities होगा तो उसका opening balance होगा क्रेडिट साइड पे. Opening balance साइड if you make entry that will increase that account, and closing balance if you make any transaction that will decrease that account. तो क्या क्या आएगा इस अकाउंट को, क्या क्या क्रेडिट करेगा बाय बैंक और कैश. ये तो कलेक्शन फ्रॉम डेटा से. बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय सेल्स रिटर्न, बाय बिल्स रिसीवेबल जो रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड, एंड बाय बैड डेट्स. ये सारे इस अकाउंट पे आएगा. इसमें क्या आएगा, साइड पे क्रेडिट सेल्स आएगा. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डिसऑनर्ड बिल, जो डिसऑनर्ड बिल है वो आएगा. बस ये है डेटा अकाउंट. तो जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन हम डिस्कस किया था, दैट इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग दिस अकाउंट वी विल बी गेटिंग. एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी अकाउंट कौन सा साइड पे होगा, ओपनिंग बैलेंस. ओके, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो ओपनिंग बैलेंस है. क्लोजिंग बैलेंस परचेज. पेबल अकाउंट, ये है डिसऑनर्ड. तो डिसऑनर किया है तो कैश और बैंक
जो भी हम क्रेडिटर्स को पे कर रहा है दैट विल बी क्रेडिटेड। फिर अगर कोई डिस्काउंट रिसीव करेगा तो वो भी इसमें आ जाएगा। और क्या होगा, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड टू परचेज रिटर्न। ये सारे इसमें आएगा। बाय ओपनिंग दिस अकाउंट एनी मिसिंग इंफॉर्मेशन दैट वी विल बी फाइंडिंग आउट। ठीक है, राइट, देख लीजिए। सो आप मुझे बताइए, यू वांट मी टू कीप लाइक दिस, कीप लाइक दिस vertical way, and you will be getting everything. Most of the items you can get it. And if I keep horizontally, only few areas you can see. You can't see the full area, full things. Okay, I'm keeping it vertically so that you can see the accounts. Chaliye, right. Go for problem number 8. Problem number 8. PDF पेज क्या है? PDF पेज क्या है? I think should be इसकी बात है ना, ये कौन सा पेज था? This was in the page 3 and 4. You know, PDF page 4. Yes, thank you. PDF page 4. Question number 8. Thank you. Thank you, Kirti. They're asking from the following information supplied by Mr. Amir Khan, calculate total sales. So we have to find out what is total sales. Total sales क्या होगा? Total sales is cash sales. ठीक है. Cash sales is given in the book. Only credit sales is not given. Credit sales के लिए कौन सा अकाउंट हम बनाना है? If the credit sales are missing, then we will be preparing the data account. Very first item. जब missing item credit sales होगा तो data account बना दीजिए and उसमें से आपको credit sales मिल जाएगा. Okay, right. We will make the total data account. Total data account. अकाउंट बना दिया. Go for it. What is given in the book? What is given in the PDF? From the following information supplied by Mr. Amir Khan, calculate total sales. Capital at the beginning, we don't take it in the debtors account. Cash in hand, we don't take it in the debtors account. Bills receivable at the beginning, yes, we need to know that bills receivable also, bills receivable account. इसमें से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? Bills raised during the period वो मिलेगा. So bills receivable account also we have to prepare. Okay. To opening balance brought down, bills receivable is how much? 7,800. Okay. Fair opening data is 30,800. So to opening balance brought down 30,800. Then cash received from Salmon as loan. यहाँ आएगा? नहीं आएगा, because that is not part of debtors. That is a part of liability and
कैश बुक का आइटम है तो it will not come here. Cash received from debtors 70,000. Yes, that will be coming by cash received. So by cash account 70,000. Then comes bills receivable in cash during the year is 20,900. So by bank 20,900. Bad debts return of 2,800. वो कहाँ आएगा? डेटा सपोर्ट पे आएगा by bad debts. How much? 2,800. 2,800. ठीक है. उसके बाद return outward. Return outward is purchase return. Return inward is sales return. तो यहाँ नहीं आएगा. We don't need. Credit purchases 150,000 to suppliers 30,000. That also we don't need because that will be going to creditors account. Then return inward 7,000, 8,700. So by sales return account 8,700. Okay. Next is bills receivable dishonored. To bills receivable account. What is this? ये dishonored bill है. Dishonored bill. इसमें आ जाएगा by debtors. Dishonored bill कितना है? Dishonored is 1,800. So 1,800 will be 1,800 here also, right? Bills receivable at the end of the year 6,000. So by balance carried down 6,000. Next क्या है? Next given debtors at the end of the year. So by balance carried 25,000. Cash sales 40,900. हमारा total sales पे cash sales भी आएगा 40,900. Then cash received from customers whose account was closed last year because of insolvency. ये क्या है? ये bad debt recovered. Bad debt recovered debtors account पे नहीं आएगा. Okay. Bad debt recovered will not appear in debtors account. एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट है तो वो नहीं आएगा. बस सारे हो गया. इसको क्लोज करने से हमको मिल जाएगा कितना बिल्स रेज किया है ड्यूरिंग द पीरियड. तो ये है 28,700 minus 7,800. 28,700 minus 7,800 is 20,900. Debtors bills raised. तो ये आ जाएगा by bills receivable account 20,900. And this is the one. ठीक है. हम यहाँ इसको ट्रांसफर किए हैं. ठीक है. इसको क्लोज कर लीजिए. You will be getting what is credit sales. Credit sales कितना है? 22,800 plus 8,700 plus 20,900 plus 25,500. ये टोटल हो गया 1,27,900. 127,900 minus 30,800 minus 1,800 is 95,300 is the credit sales. Good, Kriti. So
credit sales. Balancing figure. So 95,300 यहाँ add कर लीजिए. We'll be getting the sales for the period. कितना है 40,900 plus 95,300. 1,36,200 is the answer. ठीक है. So ये हम working note पे करेंगे. Because they are not asked for the debtors account. Simply they said find out कितना है total sales. Getting it? समझ में आ रहा है? हाँ जी. Right. चलिए right हम will go for the next problem. Problem number 12. क्या है पीडीएफ पेज नंबर क्या है? पीडीएफ पेज नंबर क्या है? प्रॉब्लम नंबर 12. प्रॉब्लम नंबर 12 पीडीएफ पेज क्या है? ये तो 4 5 should be 6. Yes, PDF page 6. Question number 12. 6 and 7. So here what they are telling, from the following particulars furnished Sri Ramji, prepare trading profit and loss account for the year and also drop the balance sheet for the year ending 31st March 2000. हमारा मेन चीज क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये मेन है. ठीक है. तो trading account and profit and loss account for the year ending 31st March 2007. So ये हो गया आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Okay, right. Balance sheet we have to make it. Balance sheet as on close of 31st March. So we have to have the opening balance sheet also. We don't call it as a face because authentically we are preparing this. Okay, balance sheet. One 4/2006. Opening. Open. Cash transaction they have given. Cash and bank is there. Therefore, we have to make these are the accounts. We have to make it in the working note.
First is the cash book. कैश बुक थोड़ा बड़ा सा बना दीजिए, वहां ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकता है। हो गया है कैश बुक। और काली अकाउंट 2-3 बना के रख लीजिए, क्या मालूम है बाद में हमको बनाना पड़ेगा। डेटा अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा 2 अकाउंट एक्स्ट्रा बना के आप रख दीजिए, सो वी कैन यूज इट। कितना अकाउंट? काली अकाउंट 1 2 3 4 काफी है। लेट अस गो फॉर इट। ये है अगर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है वो भी ओपन करना है, नहीं है फॉर्चुनेटली टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। देन जो भी अकाउंट हमको चाहिए, दोस अकाउंट्स वी कैन प्रिपेयर आफ्टर्स। डेफिनेटली एक्सपेंसेस अकाउंट को चाहिए, एक्सपेंसेस अकाउंट बाकी देख लेंगे। राइट, ओके। बैलेंसेस ना तो यहाँ पर कौन सा बैलेंस है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है? लायबिलिटीज, एसेट्स, रुपीस। ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 3,15,400। एसेट्स, रुपीस। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना दिया है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है 2,48,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस closing is 6,600. Outstanding expenses opening is 12,000. Okay. Fixed assets opening, fixed asset account opening कितना है? Fixed asset account this particular 232,200. 232,200. Okay. Opening stock 1,60,800. Stock 1,60,800. And closing stock is 2,22,400. Cash in hand opening balance कितना है? To balance brought down. To balance brought down cash in hand is 59,200. Cash at bank opening balance is 80,000. Closing balance हो जाएगा by balance carried down. Cash is 24,000 and the bank we have to find out what is that करके हम find out करना है। तो ये नहीं दिया है, इसको find out करना है। ठीक है, right, no problem.
Then sundry debtors opening balance 3,60,000. To balance brought down 3,30,600. 3,30,600. Cash 59,200. Bank 80,000. सारे हो गया. फिक्स्ड एसेट्स हो गए यहाँ. Cash in hand 24,000. Cash in hand. The bank balance is 137,600. Okay. तो सारे बैलेंसेस हम ट्रांसफर कर लिए हैं. अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लीजिए. टोटल डेटर्स क्या है करके नहीं दिया है, उसको भी क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए. टोटल क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा. क्रेडिटर्स का है 15,400 and to balance carried down 248,000 is the closing balance. ठीक है. कितना दिया है? 12,000. Closing is 6,600. 6,600 by balance brought down to balance. अच्छा 1,000. 6,600 by balance brought down to balance carried down. Right. हम सारे अकाउंट ओपन कर दिया. अभी जो भी है simultaneously we have to action. Whatever the action we have to do is simultaneously we have to action. Right. So let us go one by one. Cash balance ले लिया है. And all the accounts we have to do simultaneously. अलग अलग करने से क्या हो जाता है? मिस हो जाता है. तो आप साइड बाय साइड सारे अकाउंट हम simultaneously ऑपरेट करना है. How much the closing opening data? Opening stock, opening balance, opening stock. Opening stock is 1,60,800 and closing stock 2,22,400. Right. I am starting to do the problem now. सबसे पहले सारे अकाउंट्स ओपन करके जो भी ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस दिया है उसको ट्रांसफर कर लीजिए. रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट पे ट्रांसफर कर लीजिए. अभी हम So they say that cash discount and credited cash discount credited to cash and discount credited to debtors. तो इसमें क्या है? Total cash received discount allowed. Allowed debtors. टोटल अमाउंट दिया है 12,80,000. हमको कितना है कैश रिसीव करके हमको मालूम नहीं है. ठीक है, कर लेंगे बाद में. नेक्स्ट रिटर्न्स फ्रॉम डेटर्स. ये क्या है? सेल्स रिटर्न है. सो यहाँ जाइए बाय सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न्स है ठीक है. राइट जाएगा बाय सेल्स माइनस सॉरी
by sales less sales return. तो सेल्स रिटर्न कितना था? सेल्स रिटर्न इज रिटर्न फ्रॉम डेटर्स एट 29,000. तो यहाँ हम इसको माइनस करेंगे, राइट. बैड डेट्स 8,400. तो ये तो पीएनएल अकाउंट पे भी आएगा. टू बैड डेट्स 8,400. इमीडिएटली टेक इट इन द डेटास अकाउंट. डेटास अकाउंट कहाँ है? यहाँ है. लिख दीजिए बाय बैड डेट 8,400. सेल्स टोटल सेल्स 14,36,200 है. ठीक है, दिस इज टोटल सेल्स 14,36,200 है. ये टोटल सेल्स है. ठीक है. डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स अकाउंट पे आ जाएगा. क्रेडिटर्स अकाउंट पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड इज हाउ मच? 14,000. ठीक है. इस सेम अमाउंट को इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ले जाइए. सो यहाँ है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 14,000, 14,000. रिटर्न्स टू क्रेडिटर्स, ये है परचेज रिटर्न. टू परचेज रिटर्न्स, रिटर्न टू क्रेडिटर्स 8,000. तो यहाँ जाएगा टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स 8,000. कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक 1,70,000. ठीक है. यहाँ आएगा आपका कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल. कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक 1,70,000, 1,70,000. तो बैंक अकाउंट पे जाइए आप. यहाँ बैंक पे करना है टू कैपिटल 1,70,000. 12,50,000. तो ये आ जाएगा कैश 12,50,000. सो टू प्लस 12,50,000. ठीक है. डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग. सो इसके बाद क्या आएगा? आपको आएगा कंट्रा एंट्री आएगा. तो टू कैश 12,50,000. कंट्रा वन बाय बैंक कंट्रा वन 12,50,000. Because you have received and that amount is deposited into bank. 12 lakh. ठीक है. सो कॉन्ट्रा एंट्री है, राइट. तो ये हो गया. फिर क्या है? तो यहाँ जाइए. आपको यहाँ मिला है क्रेडिट सेल्स माइनस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 12,50,000. तो ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड आपको मिल जाएगा. डिस्काउंट अलाउड विल बी 30,000. ठीक है. तो यहाँ जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट पे आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड 30,000. ठीक है. 3,600. तो 3,600
by purchase. Cash purchase is 20,600. तो यहाँ ये टोटल परचेज क्या है करके, टोटल परचेज कैश परचेज क्रेडिट here which is purchase is 20,600. क्रेडिट परचेज क्रेडिटर्स अकाउंट से हमको मिलेगा, राइट. देन एक्सपेंसेस पेड बाय कैश 191,400. कैश बुक पे सबसे पहले कर लीजिए बाय एक्सपेंसेस कितना पे कर रहा है 191,400. तो एक्सपेंसेस अकाउंट पे हम लीजिए तो कैश 191,400 इसको क्लोज कर लीजिए. यू विल बी गेटिंग कितना है पीएन अकाउंट पे आना चाहिए 191,400 प्लस 66,000 257,400 257,400 माइनस 12,000. तो ये है 245,400 is current year expenses which will be transferred to profit and loss account. Let's see. तो हम पीएन अकाउंट पे करेंगे expenses 2,45,400. 2,45,000. Yeah, right. 45,400. सर वो 198,000 होगा एक्सपेंस अकाउंट का. क्या है 198,000. 198,000 आ रहा है. ठीक है. So 1,91,400 plus 6,600 66,000 मिलेगा. So 198,000 198 this is 198,000 minus 12,000 will be 186,000. 186,000. Okay. 1,86,000. Thank you, Kirti. Right. Next हो गया है expenses पे drawings by check. Immediately बैंक अकाउंट पे लीजिए. By drawings by check 8,600. Okay. Drawings drawn by check 8,600 might be cash drawn will be also the cash drawn. तो देख लेंगे बाद में. Right. Machinery acquired by check 63,600. Okay. By machinery 63,600. और हम ब्लैंक अकाउंट इसलिए ओपन करके रखा है यहाँ मशीनरी अकाउंट
ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस was fixed assets का है. तो बैलेंस brought down 2,32,200 by balance carried down 2,40,800 to बैंक. ये तो परचेज है. कितना परचेज किया है अभी? परचेज 63,600 हो गया. ठीक है, राइट. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख. ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है. टू बैंक सेकेंड एंट्री कॉन्ट्रा. कितना कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक? 1 लाख. बाय कैश कॉन्ट्रा 1. Cash sales 92,000. Sales. Sales 92,000. तो इसको close कर दीजिए. हाँ, टोटल सेल माइनस. इसको माइनस करने से हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा. क्रेडिट सेल्स 13,44,200. ओके, कैश सेल्स 92,000 हम कर लिया है. सो कैश सेल हम किया है, उसको माइनस किया है टोटल सेल से. वी गेट द क्रेडिट सेल्स. टेक द क्रेडिट सेल्स इन द डेटास अकाउंट टू क्रेडिट सेल्स. So credit sales is 13,44,200. 13,44,200. टोटल सेल्स कितना था? टोटल सेल्स 14,36,200. तो यहाँ हम ले सकते हैं 14,36,200. कितना आ जाएगा? 14,36,200 माइनस 29,000. So 14 lakh 7,200. ये हो गया. अब इसका आप लोगों का समझ में आ रहा है? जो साइमल्टेनियसली सब कुछ करना है. यहाँ तो कैश सेल्स दिया था, पहले हमको मिला था टोटल सेल्स. सो टोटल सेल्स से कैश सेल्स माइनस करने से आपको मिल जाएगा व्हाट इज द क्रेडिट सेल्स. सो हमको क्रेडिट सेल्स मिल गया था, राइट. चलिए, राइट. नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक 12,05,400. सो टू बैंक 12,04,000 35,400. 12,05,400. इमीडिएटली यहां लीजिए बाय क्रेडिटर्स 12,05,400. टोटल कैश परचेज क्रेडिट परचेज हमको अभी मिलेगा इसको क्लोज करने से. देन वी विल बी ट्रांसफरिंग टू P&L अकाउंट. ठीक है, इसको क्लोज कर लीजिए. नाउ वी हैव टू क्लोज ऑल द अकाउंट्स, राइट. 330,600 प्लस 13,44,200 कितना हो गया है? 16,74,800. 16,74,800
आपको अभी क्लोजिंग डेटास एज अ बैलेंसिंग फिगर यू विल बी गेटिंग. क्लोजिंग डेटास बैलेंसिंग फिगर होगा कितना है 16,74,800 minus 8,400 minus 12,50,000 minus 29,000 you get 3,87,400. 3,87,400. तो कहाँ क्या करना है इसको इमीडिएटली आप क्लोजिंग बैलेंस शीट पे इसको लीजिए डेटास 3 ये लाख. डिस्काउंट अलाउड आएगा नहीं आएगा डेटर्स अकाउंट में? डिस्काउंट अलर्ट पक्का आएगा, हम नहीं लिया क्या? नहीं सर. अच्छा 30,000. डिस्काउंट अलर्ट सर क्वेश्चन में एक कैश विड्रॉन किया है हमने, वो भी सर आपने नहीं डाला. ठीक है 184,800. ठीक है जी, कर लेंगे. डिस्काउंट अलर्ट कितना था? डिस्काउंट अलर्ट 30,000 था. डिस्काउंट अलर्ट 30,000 हम 3 लाखों पे ले लिया. डिस्काउंट अलर्ट 3 लाखों में भी नहीं लिया टू डिस्काउंट अलर्ट. ये तो बैलेंस शीट है. डिस्काउंट अलर्ट ले लिया था, ठीक है. ओके राइट, इस अकाउंट को क्लोज कर लिया है तो बैलेंस विल बी डिफरेंट. 387 माइनस 30,000 तो ये हो गया है 3,57,400 है. सो 357,400. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे इसको अमाउंट को आप ये कर लीजिए 3,57,400 ये हो गया. कैश विथड्रॉन कहाँ है? कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक. हाउ मच इट इज? 1,84,800. So we can take here by drawings 1,84,800. ठीक है, यहाँ भी ले लीजिए ड्राइंग्स 1,84,800. Total drawing has become 1,93,400. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आके इसको माइनस कर लीजिए. माइनस ड्राइंग्स 1,93,400. ये तो हो गया. लेट अस क्लोज द credit sales, credit purchase. So 14,000 plus 8,000 plus 12,05,400 plus 2,48,000. तो कितना हो गया? 14,75,400. 14,75,400. 14,75,400 minus 3,15,400. You get 11,60,000 as a credit purchase. By credit purchase 11,60,000. ये भी है बैलेंसिंग फिगर. टोटल परचेज कितना हो जाएगा? 11,60,000. 11,60,000. The total will be 11,80,000 is the total purchase. तो हम कहाँ लेना है? In the P&L account we have to take 11,80,000. 11,80,000.
ओके, ये भी हो गया। ओके, राइट। हो गया, ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी हो गया है टोटल। क्लोज करने के हम मिलेगा व्हाट इज 42,200 प्लस 63,600, तो टोटल हो गया 295,800, 295,800 minus 240,800. If you do it, you get the depreciation. So by depreciation account, balance 55,000. Immediately take it in the P&L account. To depreciation on machinery 55,000 हो गया है, ये हो गया 11,72,000। तो एक बार चेक कर लीजिए सारे अकाउंट हम क्लोज कर लिया नहीं करके, कैश अकाउंट क्लोज नहीं किया, कैश अकाउंट को भी क्लोज कर लीजिए। 59,200 प्लस 12,50,000 प्लस 92,000, टोटल इसका 140, 14 लाख 1200, 140, 1200, 14 lakh 1,200, 14 lakh 1,200। क्या है 59,200। एक्सपेंसेस कैसे पे किया है उन्होंने बताया है, एक्सपेंसेस पेड बाय कैश 191,400। ठीक है, राइट। कैश लिया है, कैश हमारा कितना आया है, कैश 92,000 is the cash sales, 1344,200. Collection from debtors, we have taken that. Capital introduced 1,70,000। ठीक है, टोटल रेट कितना आ रहा है करके देखेंगे। 12,50,000 प्लस 20,600 प्लस 191,400 प्लस 1 lakh प्लस 184,800 प्लस 24,000, that is 17,70,800। हम हमारा कुछ बैलेंस सर ये कैश विड्रॉन की कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कैश विड्रॉन तो कॉन्ट्रा एंट्री, कैश विड्रॉन का कैश विड्रॉन आई हैव टेकन एज ड्राइंग। Cash withdrawn, see it can be, yeah, they have not cash withdrawn from the bank. It's you can take it either way. You can take it as a contra entry because nothing is said very clearly. ठीक है, ड्राइंग बाय चेक दिया है यहाँ, फिर कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, टेक इट एज contra entry 184, cash withdrawn is 184,800, so this is contra 3. I have taken this as a drawings. Okay, this is by सर ये क्रेडिट साइड नहीं आएगा। या क्रेडिट साइड पे आएगा। हाँ जी, कैश विथड्रॉन नॉट नेसेसरली नीड टू बी contra entry, you can
Yes, by cash we have take. Otherwise, it is not tallying. So from that, we have to understand that this is for the office purpose. By cash, amount is 184,800. 184,800 to bank 123. 184,800 drawings पे change हो जाएगा. How much the drawings 184,800 is not there. So now let's close it. We will be getting the balancing figures. So that might be cash draw. Okay. Okay. 1,50,000 plus 20,600 plus 191,400 plus 1,24,000. The total has come 15,86,000. 15,86,000 minus 59,200 minus 12,50,000 minus 92,000 minus 1,84,800. If you do that, then nothing is coming. So it is, there is no cash drawn. Cash drawn is nil. So total drawing is only 8,600. Take it in the closing balance sheet. We have to subtract. This is 8,600. Okay, right. Now find out what is the bank balance. 80,000 plus 1 lakh 12,50,000 plus 1 lakh. Total is 16 lakhs. 16 lakhs minus 8,600 minus 63,600 minus 12 lakh 5,400 minus 184,800. You get 2,64,800. So take it in the balance sheet. Closing balance sheet. Closing balance sheet they have not given for 137,600 already they have given. Achha. 137,600 balance is already given. How come we have not taken? So they have already given the balance. I was seeing the same problem. And closing balance is 137,600. So what is the 8,600 plus 63,600 plus 12,05,400 plus 184,800 plus 137,600. It's coming 16 lakhs. The total is coming. Okay, right. So we got this. I think my calculator is having some problem. ठीक है, अगर कोई wrong होगा तो please kindly tell me. ठीक है, right. Total creditors भी हो गया, total debtors हो गया, and expenses we have transferred. Machinery account को भी हम transfer कर लिया, and discount allowed we have incorporated. Total sales को भी कर दिया, credit sales we have taken it in there. Purchases भी हो गया, drawings भी हो गया, right. Now we have to close the opening balance sheet को close कर लीजिए. So you will be getting what is opening capital that we will be getting here. So here 2,32,200 plus 1,60,800 plus 3,30,600 plus 59,200
प्लस 80,000 कितना हो गया 8,62,800 8,62,800 minus 3,15,400 minus 12,000. So you get opening capital as 5,35,400. My calculator is not. I doubt about that. Please kindly अगर आपको different answer आएगा तो मुझे बताइए अगर कोई arithmetical error होगा तो. Capital account. This is opening capital. और एक बार चेक कर लेता हूँ. Right, 232,200 plus 160,800 plus 3,30,600. 3,30,600 plus 59,200 plus 80,000. So total is 8,62. 8,62,800. ठीक है, right. Minus 3,15,400 minus 12,000. Okay, 535,400 is the opening capital. 535,400. Now add net profit. तो आपका closing capital आ जाएगा. 14,07,200 plus 2,22,000 आपका 16,29,600 16,29,600 minus 160,800 minus 1,172,000. So we get 296,000 to gross profit by gross transfer to profit and loss account by gross profit transferred from trading account. कितना आ गया 296,800 कितना हो गया 3,10,800 3,10,800 to net profit minus 8,400 minus 30,000 minus 50,000. Here 31,400 is the net profit. Add this here 31,400. Fixed assets का balance कितना आया था? Fixed assets का machinery का closing 240,800. 240,800 closing stock debtors cash in hand bank हो गया, creditors हो गया, outstanding expenses बस इसको close कर लीजिए. You will be getting the balance sheet will tally 31,400 minus 8,600 plus 170,000 plus 535,400. तो ये हो गया 7,28,200. Okay, 2,40,800 plus 400 plus 357,400 plus 24,000 plus 137,600. तो ये आ गया है 9,82,200 minus 7,28,200 48,000 minus 6,600. There is a difference of 600. We check कर लेता है 535,400 plus 1,70,000 plus 31,400 2400
21,400 minus 8,600. The outstanding expenses, how much? Outstanding expenses, 6,600. Okay. Creditors 248,000. Okay. And fixed assets are 248,800. Okay. And the stock in hand 222,400. Cash in hand 24,137,600. Sundry debtors. Yeah. 3,57,400. 357,200. 2,48,000. So here the difference are 600 से ना कम लिखा है आपने हाँ जी सर टोटल परचेज ना 600 से कम लिखा है आपने total fixed assets सर total परचेज purchase सर ये 2600 है और आपने टोटल किया 11,80,000 okay okay thank you friend so 600 so आपका यहाँ आ जाता है 200 आ जाता है so this will be 200 50,600 so this is 720 200 minus 600 727 600 plus 248,000 plus 60 982 200 okay yeah please send these notes on app on yes this will be sent right we'll be doing the next class also we'll be continuing with the single entry and single entry will be coming 100% it will be coming in the examination whether it is for 100 marks sorry whether it is for 10 marks or 16 marks it depends if your luck is very good then you will be getting the 16 mark question it is easy but my kind suggestion हमेशा आप सिंगल एंट्री को लास्ट अटेम्प्ट कर लीजिए अगर कुछ मिस्टेक इधर उधर हो गया है देन फाइंडिंग आउट द मिस्टेक आप तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे सो डोंट डू दैट सो डू इट एट द एंड or even if it is not tallying leave it and go because the step marks you will be getting not only that the marks are not given for your arithmetical accuracy the marks are given for your concept, the understanding, and how you have presented. So arithmetical error, totaling error इधर उधर हो गया because of that there is a error. Your balance sheet is not tallying. It doesn't matter even if your profit is not tallying, not the right profit. When your profit is not right, then automatically your balance sheet won't tally. So in such situations, don't try to find out the mistakes. छोड़ दो उसको कोई बात नहीं आधा मार्क कटेगा या एक मार्क कटेगा the mark is not given if I value I will be giving the full marks because आपका understanding का base पे होगा when you have opened all the accounts and it shows that you know the things and simultaneously when you are working it out nothing can be missed out